जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, वेलकम बेक टू वीर एकेडमी। आजना विडियो में आपणे पीटीसी मेरिट लिस्ट, नवुं टाइम टेबल अने पीटीसी कई कई कॉलेज है कि जेमां एडमिशन थवाना है, तो आखो पीटीसी जे कॉलेजनु लिस्ट है एना विशेनी माहिती मेळवीशुं। तो विडियो में छेल्ले सुधी बन्या रहो। तो पहला बात करिए अपने पीटीसी जे टाइम टेबल है ते। तो हाल आपने ख्याल है कि एडमिशन फॉर्म भरवानुं जे छे 5 तारीख सुधी शरू हतुं, परंतु जे तमारे फॉर्म है ए जे स्वीकार केंद्र है त्यां तमारे जमा कराववाना होय छे। तो एनी जे लास्ट डेट जे छे वधारवामां आवी हती, जे वधारीने आजनी तारीख एटले के 8/7/2026 करवामां आवी हती। तो एटला माटे जे छे आ जे टाइम टेबल जे छे एमां फेरफार करवानी फरज छे बनी छे। तो हाल टाइम टेबल जे छे एमां सुधारो थशे अने नवुं टाइम टेबल आवशे। तो नवुं टाइम टेबल आवशे एटले तमने जे छे ख्याल आवी जशे, अथवा तो जे छे तमे वेबसाइट चेक करता रहीजो। वेबसाइट है डीपी गुजरात, एमां तमे जशो एटले तमने माहिती मळी रहेशे। अथवा आपणी चेनल जे छे सब्सक्राइब करी राखो, तो एमां पण तमने अपडेट्स मळी रहेशे। तो आ हती टाइम टेबल अंगेनी माहिती। आ उपरांत नवी माहिती ए पण आवी छे के तमारे जे छे मेरिट लिस्ट छे आज बहार पाडवानुं हतुं, परंतु टाइम टेबल चेन्ज थयुं छे एटले मेरिट लिस्ट हवे पछीना समयमां आवशे। तो ए क्यारे आवशे, तो ई टाइम टेबल आवे पछी आपणने ख्याल आवे। तो आ वात थई पीटीसी एडमिशनना मेरिट लिस्टनी। तो हवे आपणे नवुं टाइम टेबल आवशे एटले त्यारे आपणने खबर पड़ी जशे के हवे पछी जे छे मेरिट लिस्ट कया दिवसे आवशे। तो तमे वेबसाइट चेक करता रहीजो। हवे आपणे कया जिल्लामां केटली पीटीसी कॉलेजोमां आ एडमिशन थवाना छे, कुल केटली कॉलेजो छे के जेमां पीटीसी थवानुं छे, तो आ बधी ज माहिती आपणे आ विडियोमां छे मेळवीशुं। तो जोईए। तो तमे एडमिशन माटेनी जे वेबसाइट है त्यां तमे जशो एटले तमने एक नवी माहिती आपेली हशे के जेमां लख्युं छे के तारीख 30/6/2026 सुधीमां डीएलएड प्रवेश प्रक्रियामां भाग लेवा अरजी करनार संस्थाओनी यादी। एटले के आ जे कॉलेजो छे के जेमणे अरजी करी छे के अमारे पण आ पीटीसी जे एडमिशन प्रोसेस शरू थई छे, तो एमां अमारी कॉलेजमां जे छे भाग लेवा मागे छे। तो अत्यारे जे छे एनुं लिस्ट आवी गयुं छे। कुल 228 जेटली कॉलेजो छे के जेमणे ईमेल द्वारा अथवा तो जे माहिती है ए हमने आपी है। तो हवे आज कॉलेजो जे छे एना डॉक्यूमेंट चेक थशे, वेरीफाई थशे अने त्यार पछी जे छे आखुं लिस्ट कन्फर्म थशे के आटली कॉलेजो जे छे एने एडमिशन माटेनी मंजूरी मळी छे। तो आटली जे कॉलेजो छे अहीं आपी छे एमां मोस्ट ऑफ बधी कन्फर्म हशे, पण अमुक जे कॉलेजो छे ए आमांथी जे छे मान्य नहीं होय तो जे छे निकળી जशे, बाकी बधी कॉलेजो छे मान्य रहेशे। तो आपणे जे आखुं लिस्ट है एनी कॉलेजो जोईए। तो तमारे जे छे तमारा जिल्लानी जे कॉलेज आवती होय तो तमारे जे छे आमां जोवानुं छे अने स्क्रीनशॉट लई लेवानो छे, जेथी तमने छे माहिती मळी रहे। तो हूँ दरेक जे कॉलेजनुं लिस्ट आपेलुं छे तो एना जे पेज है हूँ चेन्ज करूँ छूँ। तमारे जिल्लानी जे कॉलेज आवती होय तो तमारे त्यां स्टॉप करीने तमारे स्क्रीनशॉट लई लेवानो छे। तो अहींया तमने अमरेली, मोरबी, राजकोट वगैरे जिल्लानी कॉलेजनुं लिस्ट आपेलुं छे। जेमने लागू पड़तुं होय स्क्रीनशॉट लई लेजो। अहींया 22 कॉलेज पूरी थाय छे। हजी घणी बधी कॉलेज है। कुल अहींया 228 जेटली कॉलेजनुं लिस्ट आपेलुं छे।
તો તમારા જિલ્લાની જે કોલેજ છે તો એ તમારા ધ્યાનમાં આવે તો તમે ધીમે ધીમે જે છે ચેક કરજો અને તમારા જિલ્લાની જે કોલેજ આવે તો ત્યાં સ્ટોપ કરીને સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે અમારા જિલ્લાની કઈ કોલેજમાં એડમિશન થવાના છે. આ હાલ કન્ફર્મ નથી, બરાબર છે. હજી તો ફાઇનલ કોલેજનું લિસ્ટ આવશે પછી તમે જે છે જે ચોઇસ ફિલિંગ છે એમાં આ કોલેજને તમે ઉમેરી શકો અને તેમાં તમે એડમિશન લઈ શકશો. તો અહીંયા અમદાવાદ છે, પાટણ છે, દાહોદ છે વગેરે જિલ્લાની કોલેજો અહીંયા તમને આપેલી છે. આ ઉપરાંત કોલેજનું નામ આપેલું છે અને NCT કોડ તમને આપેલો છે. તો હજી તો આ કોલેજનું જે ડોક્યુમેન્ટ છે વેરિફિકેશન હજી થશે, ત્યારબાદ કન્ફર્મ થશે. તો અહીંયા 200 જેટલી બરાબર છે. આગળ જોઈએ તો હજી 228 જેટલી કોલેજોનું લિસ્ટ અહીંયા આપેલું છે. તો તમારા જિલ્લાની કોલેજ જે છે એ તમે જોઈ લેજો. નીચે અમુક માહિતી આપી છે. તો ઉપરોક્ત જે યાદી છે એ માત્ર સંબંધિત સંસ્થાની જાણ ખરાઈ માટે જાહેર કરેલ છે અને આ યાદીવાળી કોલેજ હાલ પસંદગી પાત્ર કોલેજ તરીકે જાહેર કરેલ નથી. એટલે કે આ જે કોલેજ છે હજી પસંદગી નથી થઈ, હજી ડોક્યુમેન્ટ જે છે વેરિફિકેશન થશે, ત્યારબાદ જે પસંદગી પામેલ કોલેજ છે એનું લિસ્ટ આવશે. તો લિસ્ટ આવશે એટલે આપણે તરત જે છે એ અહીંયા મૂકી દઈશું. તો લાસ્ટમાં જે નોંધ છે જુઓ, ઉપરોક્ત યાદી NCTના પોર્ટલ પર માન્ય સંસ્થાઓની યાદી સાથે ચકાસણી બાદ સુધારા વધારાને આધીન રહેશે. તો જે સુધારો થશે. આ હતી આજની માહિતી. તમને માહિતી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો, ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળીએ નવા વિડીયોમાં. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.